Okay, so we are starting with the first chapter of indirect taxes, and that is Introduction to Indirect Tax and GST. Now, full form of GST is Goods and Services Tax. Goods and Services Tax. My voice is breaking. So we have two types of taxes. The first one is direct tax, and the second one is indirect tax. What do you mean by direct and what do you mean by indirect? Direct means the impact and the incidence is on the same person. That means जो टैक्स मुझे भरनी है वो मैं ही भरूंगी और बर्डन भी मुझ पे ही आएगा. Immediate ultimate burden is on the same person. That means if I am earning my income, suppose example, if I am earning income, therefore I am the one who is liable for paying the tax. Therefore it is direct tax. Nobody is between me and government. There is no agent between me and government who is going to pay tax for me. I am the one who has to pay the tax. And on me, there is a direct burden of the tax. Therefore, it is known as direct tax. The biggest example of the direct tax is income tax, wealth tax, property tax. है ना, ये हमारी इनकम है इसीलिए हमने ही टैक्स भरनी है. ये हमारी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, हमारा घर है जिसके लिए हमने ही टैक्स भरनी है. किसी नेबर को तो नहीं बोलेंगे जाके भर के आने के लिए, है ना. तो हम इसे एस्केप नहीं कर सकते. लिखा हुआ है देखो, एंड द टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एस्केप्ड. दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स को भी एस्केप नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इसको तो बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट टैक्स को. So what is indirect tax? Indirect tax is one in which impact and incidence is not on the same person. Impact means the final, when final जो जो पेमेंट किया जाता है उसके Result. थ्रू. यस, उसे कहते हैं इम्पैक्ट. इंसिडेंस मीन्स जिसके ऊपर ये आया, कौन ये भर रहा है इंसिडेंस, और कौन ये भर के आएगा इम्पैक्ट. कुणाल अगेन एडमिट हो गया. कुणाल एडमिट. ओके, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स में एक पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट और इंसिडेंस नहीं आता है. द इम्पैक्ट इज ऑन डिफरेंट पर्सन, incidence is on different person. Example, if I'm purchasing a particular commodity from a shopkeeper, I will have to pay him the price inclusive of the tax. Okay, now he will collect the tax from me, but he is the person who has the impact. It is on that shopkeeper that he has to pay to the government. The impact is on the shopkeeper to pay it to the government. Incidence is on me. I am going to pay out of my pocket, but I'm going to pay to whom? To the shopkeeper, and shopkeeper will pay it to the government. So there is a link between me and the government. That's the shopkeeper. Okay. So indirect, the word itself says what is indirect. Indirect means I'm not connecting to the government directly. I'm not paying to the government directly. Rather, somebody is there in between, and he is supposed to pay the tax to the government. Therefore, impact and incidence is not on the same person. And indirect tax is levied on goods and services, whereas direct tax was levied on income of the person. But indirect tax is not levied on the income of the person. It is on the goods and services consumed by the person. Do you get the difference between the two? Direct tax, income of the person. Indirect tax levied on goods and services consumed by the consumer or person, you can say, rather than on individual or a company. वो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाई जाती है, लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगती है. डायरेक्ट टैक्स लोगों के ऊपर टैक्स लगाई जाती है उनकी इनकम पे. वन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज सेल्स टैक्स. क्या होता है सेल्स टैक्स में? कस्टमर पेज फॉर द आइटम्स दे परचेज फॉर देयर पर्सनल यूज. When I am going to purchase anything for my personal use, I will pay sales tax because I'm going to consume that product. I'm taking that opportunity and the benefit of using that service provided by the shopkeeper. Therefore, he will ask me to pay the tax also.
together with the price of the commodity. And price of the commodity is to be kept by that consumer, shopkeeper. But the tax which he has collected from me, he has to deposit that amount of tax, that same amount of tax, to the government. He is not supposed to keep it with himself. Okay. So I hope you have understood the difference between direct and indirect tax. The next is just a picture to show you. There is a difference between, there is a slight difference between direct and indirect. Okay. In the direct tax, ultimate burden of the tax payment is on the person, okay, is on the same person, and responsibility is also on that same person. See, ultimate burden and responsibility to pay the tax. Ultimate burden means impact. Responsibility to pay the tax means incidence. So both is on same person. Example with our income tax. When you earn income, you are responsible to pay the tax. And you also have the burden to pay the tax. That means you only have to pay the tax for your income. Okay, the burden is over you, not to somebody. Therefore, नीचे जो घर जैसा बना हुआ है ना 4 pillars के साथ, वो गवर्नमेंट का, समझो ये गवर्नमेंट का घर है. So she is going to pay to the government directly. There is single arrow which shows that she is going to pay to the government directly. There is no somebody in between them. ठीक है. अब इनडायरेक्ट टैक्स पे देखो, अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? That lady. Okay, she is going to pay, but who is going to deposit it to the government? Responsibility to pay the taxes, shopkeeper. Can you see a middle part of the picture in the indirect tax, जिसमें बना हुआ है indirect tax में, उसमें middle part में देखिए, देखो shopkeeper बना हुआ है, वो दुकान जैसा बना हुआ है, एक शॉप है. ठीक है. तो वहां पे वो जो पर्सन बैठा है, आपने उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट टैक्स की गवर्नमेंट को वो पहुंचाएगा, आप नहीं पहुंचा रहे हो. देखो, आप सीधा नहीं पहुंचा रहे हो गवर्नमेंट को. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वैट. व्हेन यू बाय स्टफ, कोई भी चीजें आप खरीदते हैं, द शॉपकीपर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स, बट ही कैन कलेक्ट इट फ्रॉम यू. So the ultimate burden is over you, impact is on you, but incidence is on the shopkeeper. Incidence means final payment कौन करके आता है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? शॉपकीपर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आई बात समझ में? इतना सबको क्लियर है? Yes. ओके, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पहले इम्पोस्ट, किसके ऊपर इम्पोस्ट किया जाता है? इनकम एंड प्रॉफिट्स. और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोस्ट किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज. देखो, आप में से बहुत जनों को पता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन बहुत जनों को नहीं भी पता है. सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है ना? तो पहला इम्पोज किसके ऊपर होता है? डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? प्रॉफिट्स के ऊपर, इनकम्स के ऊपर. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज.